Good morning, students. Welcome to Silver Bells Mansarovar Online Education. Myself, Vinod Trivedi. Today, we are going to discuss chapter number 2, Lost Spring. In this chapter, second part, I want to drive a car, we are going to discuss. Okay, already we have discussed about the story of Sahib Alam. In this chapter, second part is I want to drive the story of Mukesh. We are going to discuss. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. So, in this story, Mukesh does not like to work as a labor and he wants to make his own planning for his life and he want to become a master. So the writer asks over here, do you know anything about cars? I ask. Okay, and his son has asked him, do you know anything about car? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dreams looms like mirage amidst the dust of states that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. Student, in previous story we discussed about Sahib. So his family is engaged in rag picking. Over here, the family of Mukesh and also other people who are living surrounding him in Firozabad, they are engaged in bangle making activity. So a number of family, those who are living there, they are working in bangle making factories. Now what happened? Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generation working around furnaces, welding glass, making bangles for all women in the land, it seems. It means this is a big business, okay, in Firozabad. A number of people who are working in Bengal making activity, and actually where it can be happen nearby furnace, welding glass and making bangles. So it is look like that all women who are living in the world, okay, their bangles are made in फिरोजाबाद. यहाँ ऐसा बताया ट्राई किया है कि बड़ा सा बिजनेस है बैंगल मेकिंग का यहाँ, और बहुत सारे लोग जो है वो उस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं. नाउ इन नेक्स्ट पैरा, मुकेश फैमिली इज अमोंग देम. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in digny cell without air and light. That the law is enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylights hours after losing their brightness of their eyes. So students, over here, actually as you know, the rule of child act, okay, small children, they cannot work in such a area, but even though they people are unaware about it, the law, and they nothing, because we can say by this way there is a lacking of education as well as the extreme poor condition and force them to work in such a area. Now what happened? How many? 20,000 children they are working in
दी हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग द डे लाइट आर्स। ओके, पूरे मतलब दिन का जो उजाला है वहाँ ही पास होता है, मतलब कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं और रात को ही वो वहाँ से काम करके बाहर निकलते हैं। नाउ नेक्स्ट, मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम which he proudly says is being rebuilt. Okay, Mukesh, he was a volunteer to make me, it means writer वहाँ जा सके तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? मुकेश। मुकेश उनको एक वॉलंटियरली उनको वहाँ ले गए। विच प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग lanes choked with garbage, that area, okay, stinking everywhere, dirtiness is there. Okay, then past homes that remain hovels with crumbling wall. Okay, the meaning of hovels mean bad condition, मतलब कि जो वॉल्स थी उसकी कंडीशन भी सही नहीं थी। देन वॉबली डोर्स, नो विंडोज, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state. Primeval state का मतलब है बहुत पुराना। ये over here we can see people, human beings and also animals, they are living nearby. Then he stops at the door of such house, bangs the wobbly iron door with his foot and pushes it open. Okay, उसने पैर से धक्का मारा और उसने दरवाज़ा खोला। We enter a half built shack. half built shack मतलब कि टूटा फूटा मतलब हट उसने बनाया है जिसमें थोड़ा बहुत आयरन का यूज किया है, वायर का यूज किया है, और ऐसा एक शेक मतलब कि एक जो रूम जैसा टूटा फूटा वहाँ वो ले गया। We enter a half built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. तो वहाँ गए तो जो उसका जो छत था उस पर ग्रास डाला गया था, डेड ग्रास, और उसके नीचे मतलब कि लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव। ओके, तो स्पिनच की सब्जी ये लोग बनाते होंगे तो उसका जो उबलने का या तलने का जो आवाज़ आ रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, अदर रिमेनिंग थिंग्स आर ऑल्सो देयर। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल यंग वुमेन, यंग, शी वॉज यंग बट फ्रेल, फ्रेल इट मीन्स वीक, वीक जो वुमेन थी वो पूरे फैमिली का खाना बना रही थी। अ फ्रेल वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स इवन दो, ओके, स्मोक इज देयर। ओके, चूल्हे पे खाना बनाना मतलब कि वो बड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है, फिर भी शी स्माइल्स। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश की एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई उनकी वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, her husband, Mukesh and their father. So what happened? Actually the age of that lady was not so much, but even though after getting marriage शी इज़ कॉल्ड एज बहू, मतलब वो फैमिली में बुलाया जाता है वर्ड, और उसके साथ उसको मतलब कि 3 जनों का खाना सब संभालना होता था, मतलब कि जो उनके लिए खाना और जो करके काम काज है तीनों के उसको करने होते थे। इन चार्ज ऑफ 3 men, मतलब कि उसका हस्बैंड, मुकेश और उसके पापा। नाउ देन मुकेश and their father, when the older man enters, she gently withdraw behind the broken wall
एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल जो मतलब कि हम घूंघट बोलते हैं या मुस्लिम के लिए पर्दा, तो बुर्खा, जो बुर्खा, हाँ, तो वो क्या करती थी, मतलब कोई भी एल्डर उससे बड़ा घर में आता था तो वो दूसरी जगह पे चले जाती थी और मुंह पे मतलब कि जो घूंघट ढांक देती थी। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल elders. In this case, the elder in an impoverished bengal maker. ओके, तो एक प्रथा है कि अगर कोई लड़की है तो उसके हस्बैंड का उससे बड़ा कोई भी आता है तो घूंघट रखते हैं। और दूसरा कि एक वर्ड आया इम्पावरिस्ट बेंगल मेकर। ओके, तो बहुत दुबला, एक्चुअली बड़ा था मुकेश के भाई का जो है पत्नी, वो मतलब कि जो सिस्टम थी वेल, तो उसके फादर के लिए मुकेश और इसके भाई के फादर जब आते थे तो उनकी जो ये वुमन वो पर्दा रखती थी, और इवन दो वो इम्पोरिस्ट थी, और वो जो थे मुकेश के पापा, वो भी मतलब कि बहुत दुबले थे बिकॉज ऑफ वर्क। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन बेंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons to school. All he managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. It means after doing lots of hard work, okay, after working as a tailor, even though bangle maker, but he didn't get anything. Okay, the father of Mukesh and his brother, who was unable to renovate his own house, as well as he was unable to send their children to the school. Okay, only he could do to teach the art of making bangles to his children. Okay, so we can say we can understand the condition of the people. It is karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Actually, the grandmother of Mukesh, she was saying that it is a destiny, कर्म, हमारे कर्मा जो है वो। ओके, क्योंकि उसके हस्बैंड थे बहुत लॉन्ग टाइम ये बेंगल में क्या काम करते करते उनकी आई साइट चली गई थी, तो उनके बच्चों के साथ मतलब कि बराबर देख भी नहीं पाते थे, तो अभी वो काम करते रहते थे कि ये हमारी भाग्य है। कैन गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। अब बेटा लाइनेज का मतलब होता है कि वो रेगुलर चलता रहता है। मुकेश के पापा भी ऐसा करते थे, अभी मुकेश भी सपोज आगे जाके वो करे और उसके नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी वो भी ऐसे ही चलेगी। एक एक क्वेश्चन भगवान के सामने रखा है। सी इम्प्लाइज born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengal in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every state in Firozabad. So she tells that, okay, being Bengal maker, she has seen everywhere Bengals in street or other in neighboring side also. She has seen only bangles, nothing, anything more. So, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounts in unkept yard, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to line of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers welding
pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. So what kind of work? Everywhere bangles are there, and what say the whole family is engaged in making different kind of bangles, and they are used to uh, work in from morning to till late night also. Okay, students, we are keeping till here. Okay, you read it properly and try to understand this thing. Okay, in next video we will finish this lesson. Thank you and have a nice day.